वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम YouTube पे अभी अभी नए शुरुआत किए हैं, तो हम आप लोग के सपोर्ट की उपेक्षा करते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम आने वाले समय में नए नए एनाटॉमी वीडियो, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और अन्य वीडियो बनाते रहेंगे अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम आपको विश्राम सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी से आपको हार्ट के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। हार्ट तो ये क्या होता है? ये एक होता है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम of the thoracic cavity enclosed by the pericardium. It is somewhere the pyramidal in shape, placed obliquely behind the sternum and adjoining the parts of costal cartilage, so that 1/3 of the heart is to the right of the median plane and 2/3 of the heart is left of the median plane. हार्ट में 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। शेप एंड मेजरमेंट। हार्ट का शेप जो होता है पिरामिडल या कोनिकल होता है। मेजरमेंट इसकी लेंथ जो होती है 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो होती है 9 सेंटीमीटर होती है। वेट ऑफ जो हार्ट होता है एक नॉर्मल मेल्स में, एक मेल में 300 ग्राम का होता है और एक फीमेल में 200 ग्राम का होता है। तो हम आपको एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो कि फिगर एपेक्स होगा, बेस होगा, सरफेस होगा, स्टर्नोकोस्टल, डायफ्रैग्मेटिक एंड लेफ्ट। 4 बॉर्डर होगा, राइट, लेफ्ट, अपर एंड इंफीरियर बॉर्डर्स। एपेक्स हुआ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, आर्च ऑफ एरोटा, pulmonary trunk, left pulmonary veins, left auricles, superior vena cava, ascending aorta, right pulmonary veins, right auricles. एपेक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो एपेक्स है उसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे हम। Apex of the heart is the conical area are formed by the left ventricles. It is directed downward and forward and to the left. It lies at the level of 5th intercostal space, 3.5 inches from the midline and just medial to the midclavicular line. फिर से करेंगे base of the heart पे। The base is formed by the 2 atria, mainly by the left atrium. Strictly speaking, 2/3 of the base is formed by the posterior surface of the left atrium and 1/3 by the posterior surface of the right atrium. It is directed backward and to the right. Characteristic features of the base. It lies opposite to the apex. It lies in the front of the middle 4th thoracic vertebra, T5 to T8. The base is separated from the vertebral column by the oblique pericardial sinus, esophagus and aorta. Surface of the heart. Surface of the heart. Heart has the 3 surfaces: sternocostal, diaphragmatic and left surface. Sternocostal surface. It is formed by mainly the right atrium and right ventricle, which is separated from each other by the anterior part of the anteroventricular groove. The sternocostal surface is also partially formed by the left auricle and left ventricle. The right ventricle is separated from the left ventricles and anterior interventricular groove. Diaphragmatic surface. Diaphragmatic surface. The surface is flat, rests on the central tendon of the diaphragm. It is formed by left and right ventricles, which are separated from each other by the posterior interventricular groove. The left ventricle is formed left 2/3 of this surface, and the right ventricle forms only
right one-third of this surface. Left surface is formed mainly by the left ventricles and partially by the left atrium and auricle. It is directed upward, backward and left. Borders of heart: right border, left border, inferior border and upper border. Right border, more or less vertical and formed by the right atrium. Left border, curved and oblique, formed by mainly the left ventricle and partially by the left auricles. Inferior border, it is nearly horizontal and extends from opening of inferior vena cava to the apex of the heart. It is formed by the right ventricle. Upper border, it is slightly oblique and formed by the right and left atria. Chamber of heart, इसमें चार चैम्बर होता है: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. Two atrial chambers are separated from each other by the vertical septum in the atrial septum. Two ventricular separated by the interventricular septum. The right atrium communicates with the right ventricles through the right atrioventricular orifice, which is guarded by the three cups. The left atrium communicates by the left ventricle with the left ventricles through the left atrioventricular orifice, guarded by the two cups. The wall of the chambers of the heart are made of cardiac muscles, that is myocardium, which is covered by the externally by the serous membrane, that is epicardium, and lined by internally endothelium, the endocardium.